Welcome back to the third lesson of chapter number 13 of the new book, Surface Areas and Volumes. In today's lesson, students, we are going to be learning about finding about the volumes of different shapes of objects, whether they are spherical or cylindrical or conical, cubical, and a combination of these shapes. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, bringing you the third lesson of this chapter. We have 3 examples and 8 questions of exercise 13.2 that we would like to cover in today's class. Let's quickly first revise the formulas for the volume of solids. And we know if you have a cube each of side a, then the formula for the volume of a cube is a cube. A cuboid, length into breadth into height. Cylinder, area of the base, which is pi r square into h. A cone, base radius r, height h. Volume is given as 1/3 of pi r square h. A sphere is 4/3 times of pi r cube. Hemisphere is a half sphere, half the volume of a sphere, that's 2/3 pi r cube. So these 6 formulas we are going to be using in today's class. The first example says that we have a shed which is in the form as shown in this diagram. This shed has a length 15 meters and the width of this shed is 7 meters and the height of the shed is 8 meters. Above this cubical shed we have a half cylinder. The roof is half cylindrical. Therefore, the radius of this half cylinder would be half of the width, that is radius is v/2, that's 7/2, 3.5 meter, and the length is going to be 15 meters itself. So what all we are given here, we are trying to write in symbol form. So radius v/2, length, breadth, height from the diagram itself. So we need to first draw these diagrams before we proceed ahead. And the question is, find the volume of air in this empty shed. So the total volume, we can divide this compound volume into 2 parts. Volume of the cuboid plus volume of half cylinder. We know volume of a cuboid is length into breadth into height, LBH, and the volume of the half cylinder will be half of pi r square L, where L is the height of the cylinder. Half. Why half? Because we are not taking the full cylinder, just half of the cylinder. Now, once we write things in the formula form, we only need to substitute the value of L as 15, B as 7 and H as 8, and substitute, take pi as 22/7, radius 3.5 into 3.5, and the length is 15 meter. If I solve this, I get my answer, which is 1128.75 cubic meters. The second part of this question says, if the machinery in the shed occupies 300 cubic meter and there are 20 workers, each of who occupies 0.08 cubic meter space, what is the remaining space for air in the shed? So we have to subtract the space occupied by the machinery and the workers. So directly machinery occupies 300 cubic meter
and there are 20 workers each occupying 0.08. So 20 into 0.08, that's 1.6. So total space occupied by things inside the shed is 301.6 cubic meters. The total volume of the shed is 1128.75. So if I subtract this volume 301.6 from 1128.75, I get the resultant air in the shed is 827.15 cubic meter. सही बात है बच्चों? आइए तो आप पॉज कीजिए इसको और इसको सॉल्व आउट कीजिए. The second example that we are taking up, that's example number 6. आओ पढ़ते हैं बुक से क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in this figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeters. So diameter is 5 centimeters, therefore the radius will be half of that, that's 2.5 centimeters. But the bottom of the glass had a hemispherical raising. तो नीचे से ये खाली है, धोखा है. Hemisphere है, आधा sphere है, bottom, which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Apparent मतलब बाहर से देखने वाले को तो दिखता नहीं है ना ये चीज में एक कैविटी है. तो apparent मतलब जो appear होती है, लगता है कि है, असली में actual मतलब real capacity. Apparent capacity will be volume of a cylinder of radius 2.5 and height 8 centimeters. Whereas the real volume would be the volume of the cylindrical portion minus volume of the hemisphere. ठीक है, तो डायग्राम समझ आया सब बच्चों को? ठीक है, तो आइए. So volume of the cup, we are saying the real volume of the cup, actual capacity of the cup is volume of the cylinder minus volume of hemisphere. Volume of a cylinder is pi r square h, and the volume of a hemisphere, formulas we have revised in the first slide, is 2 by 3 pi r cube. Pi दोनों के पास है, r square है, so let me take pi r square as common. I am left with h minus 2 by 3r. In this case, question says take pi as 3.14. So I take 3.14 into radius 2.5 into 2.5, h is 10, 2 by 3 times of 2.5. I solve this and I get the volume. The actual volume of the cup is 163.54, right? And if I need the apparent volume, so I just have to take this figure. If I take only this figure, if I just calculate this pi r square h, right, this is the apparent volume, no? So that means this pi r square h, yeah. So 3.14 into 6.25 into 10, that is the apparent volume. Okay. Example number 7. A solid toy is in the form of a hemisphere, that half sphere, yellow portion. So a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. उसके ऊपर एक कोन है. The height of the cone is 2 centimeters and the diameter of the base is 4 centimeters. So the radius of the base would become 2 centimeters, right? If
Determine the volume of the toy. First part, if a right circular cylinder circumscribes this toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. So एक टॉय है हेमिस्फेरिकल शेप, ऊपर कॉन, और उसको हमने पैक किया है सिलेंडर के अंदर. तो सेकेंड पार्ट में हमको ढूंढना है कि बिग वॉल्यूम of the cylinder minus the volume of the toy. So let us start by calculating what is the volume of the toy. So volume of the toy is basically the volume of the yellow hemisphere plus the volume of the cone. Let's write down the formulas. Volume of a hemisphere is 2 by 3 pi r cube, and volume of a cone is 1/3 of pi r square h. Here radius is 2 centimeters and height is also 2 centimeters. So let me take out pi r square as common. So I am left with 2 by 3 r plus 1/3 of h. So 3.14 into 2 into 2, and I substitute the value of here r and h, 2, and we do a little calculation. Look at the calculation please. 4 by 3 plus 2 by 3, that's 6 by 3, that's 2. So the volume of the toy is coming out to be 25.12 cubic centimeter. First part. What about the volume of the outer cylinder? Volume of this outer cylinder is pi r square. Total height of the cylinder? Total height of the cylinder is 2 plus 2, that's 4 centimeters. So 3.14 into 2 into 2 into height is 4 centimeters, and I calculate, it comes out to be 50.23 centimeter cube. What is the difference in the volumes? So we can see 50.24 minus 25.12, that's again 25.12. उतना ही आ रहा है. इसका मतलब the volume of the outer cylinder is 2 times the volume of the toy, right? Or the volume of the toy is half the volume of the packing cylinder, right? So as usual, it's time for you to pause and do this in your copy before you look at the next question, which is the exercise 13.2. 13.2 exercise says a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter, and height of the cone is equal to its radius, that is again 1 centimeter. Find the volume of the solid in terms of pi. Don't take value of pi, answer should be in pi only. So we are given radius is 1 centimeter, height is also 1 centimeter, and this toy has two shapes, hemisphere, and there is a cone on the top of the hemisphere. So total volume will be equal to volume of the hemisphere plus volume of the cone. We know the formula for the volume of a hemisphere is 2 by 3 pi r cube, and volume of a cone is 1/3 of pi r square h. Let me take the values of r and h here. I get 2 by 3 pi into 1 cube and 1 by 3 pi, 1 square into 1. So we are left with 2 by 3 pi plus 1 by 3 pi. And if I take LCM, I get 3 by 3 pi, or that's simply pi. So volume of this toy is pi centimeter cube. A very important question, many times it has been asked in the exam. So volume total is pi cubic centimeters. Okay, let's go to question number 2. Here, Rachel
an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeters. Diameter of this model is 3, therefore radius will be half of 3, 1.5, and its length, total length is 12 centimeter. यहाँ से इस टिप से लेकर इस टिप तक 12 centimeters. If each cone has a height of 2 centimeters, तो यहाँ से यहाँ पे 2, यहाँ से यहाँ 2, तो बीच का जो cylindrical part है 12 minus 4 will be 8 centimeters. Question है, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Volume of this, we can call this a model, a toy again. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा हमने एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ डायग्राम. तो हमने डायग्राम बनाया और जो भी हमारे चीजें गिवन हैं उनको सिंबल फॉर्म में, रेडियस is half of diameter 1.5 centimeter, height of the conical part is 2 centimeters each, and the length of the central cylindrical part is 8 centimeters. Once we have done this, we are now ready to find the volume of this cone. So we'll say the total volume is the volume of the cone on the left side plus volume of the cylinder and then volume of the cone on the right side. So both the cones are identical, so I can even write total volume is volume of the cylinder plus 2 times the volume of the cone. So volume of the cylinder, students, is pi r square into L, and volume of the cone, 2 तो 2 की जगह आया, cone का volume होता है 1/3 of pi r square h. Let me take pi r square as common, so I am left with L plus 2/3 h. Alright, so here pi को 22/7 ले लिया है, r 1.5, length is 8, 2/3 times h is 2 centimeters, that's 4/3. सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे तो 8 3 24, 24 plus 4 28/3. कटिंग करते हैं, the total volume comes out to be equal to 66 cubic centimeters. So time to pause. If you have understood, very good. Else, see again. Pause, write down in your copy before you move ahead. Okay. Question number 3, गुलाब जामुन क्वेश्चन. वाओ, गुलाब जामुन ऐसे होते हैं ना, ऐसे कुछ गुलाब जामुन होते हैं, तो एक तो होते हैं बिल्कुल बॉल की तरह होते हैं, कुछ ऐसे आपने देखे होंगे, खाए भी होंगे, थोड़े से लंबे होते हैं, ऐसे इस शेप के होते हैं गुलाब जामुन. तो दो शेप के आते हैं, तो हमारा ये गुलाब जामुन जो है वो इस तरह से इलोंगेटेड शेप वाला है. गुलाब जामुन होल्ड शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. जो भी वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30% शुगर का चाशनी है. हाउ मच सिरप कैन 45 गुलाब जामुन होल्ड हुज शेप इज एज शोन बिलो. So what is given to us? The diameter of the gulab jamun is 2.8 centimeter. Therefore, radius will be half of that. That's 1.4 centimeter. So diameter is 2.8. So radius is 1.4 centimeters. The total length of the gulab jamun given to us is 5 centimeters. Now the diameter is 2.8. So गुलाब जामुन को मान सकते हैं ना हाफ. देयर इज अ हेमिस्फीयर हियर, देयर इज अ हेमिस्फीयर हियर. सो इसका अपना रेडियस, इसका अपना रेडियस, दो रेडियस मिलेंगे तो डायमीटर बनेगा.
तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो आई गेट द लेंथ ऑफ दिस ब्राउन सिलिंड्रिकल पार्ट h इज 2.2 सेंटीमीटर, राइट? यहां पे हमने किया. Now what is the volume of the total volume of the gulab jamun? It will be the volume of the cylindrical section plus 2 times the volume of the two yellow hemispherical sections. Two hemisphere is one sphere. Let's write down the formula now. So total volume of the cylindrical section is pi r square h plus 2 into 2 by 3 pi r cube. पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो आई गेट h प्लस 4/3r. Once we reach the simplified formula, we will substitute these values, r as 1.4, h as 2.2 in this, and we will solve this calculation. Kindly see, I have used a calculator to do this. So not a big deal. You can also use a calculator. You don't need to copy directly from here. If you have a calculator, solve it yourself. So total volume of one gulab jamun is 25.05 cubic centimeters. According to the question, 30% of this volume is the volume of the sugar syrup, is 30% of volume of the gulab jamun. So volume of sugar in one gulab jamun will be 30% का मतलब 30 by 100 into 25.05. So the volume of sugar syrup is 7.52 cubic centimeters, right? ये तो एक का है. हमको बोला वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन. You have to multiply this by 45. 45 into 7.52, that's 338.4 cubic centimeters of sugar syrup. Itna sugar is there in 45 gulab jamuns. Okay, that's the question. पहले वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन ढूंढा, फिर 30% ऑफ दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप, एक का ढूंढा, फिर उसको हमने 45 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हैज बीन फाउंड. तो गुलाब जामुन क्वेश्चन, किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, आप सिर्फ मैथ करिए. ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया. अगर आप ये इसको 2 दिन में करना चाहते हो तो थर्ड क्वेश्चन तक आप आज कर लीजिए, फिर आप कल भी कर सकते हैं. 2 दिन दे रहा हूं मैं आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल वीडियो आउट ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन, बट यू सॉल्व दिस फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. It says a pen stand has a conical depression. एक पेन स्टैंड है, जैसे पेन रखते हैं, ऐसा साइड से देखूंगा तो पेन को अटकाने के लिए कॉनिकल पार्ट्स हैं उसके. इन कोन्स का कुछ रेडियस होगा, कुछ डेप्थ होगी, और ऊपर से देखूंगा तो ऐसे सर्कल नजर आएंगे मेरे को. और ये लकड़ी है, 10 सेंटीमीटर वाइड है, 15 सेंटीमीटर लंबी है, और 3.5 सेंटीमीटर इस लकड़ी की हाइट है. तो इसमें 4 पेन खड़े करने के लिए जगहें हैं, स्लॉट्स हैं, कॉनिकल डिप्रेशंस हैं. इन कॉनिकल डिप्रेशंस का रेडियस r is 0.5 centimeters and the depth is 1.4 centimeter. Total depth of this wood is 3.5, तो पूरे नीचे तक नहीं गए हैं. Length, breadth, height of the wooden block is shown in the diagram and given here. Question is, what is the volume of the wood used in this pen stand? टोटल लकड़ी का वॉल्यूम कितना है? तो लकड़ी का वॉल्यूम मतलब मेरा वाइट वाला वॉल्यूम, मुझे उसमें से जो मेरा मस्टर्ड वाला वॉल्यूम है उसको मुझे सबट्रैक्ट करना है. So I have to remove 4 volumes. So total volume of the wood is volume of its cuboid minus 4 times the volume of each cone.
राइट, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो पहले क्वेश्चन को समझना, डायग्राम बनाना और सोचना कि करना क्या है, वो फर्स्ट स्टेप है। फिर आप फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट minus 4 times volume of one cone is 1/3 pi r square into depth. So length, breadth, height मालूम हमको, so 15 into 10 into 3.5 minus 4/3, pi को 22/7 दिया है, radius is 0.5 into 0.5 and depth is 1.4. We solve this and we get our answer that volume of the wood used is 525.53 centimeter cube. किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम अगर आपसे बन गया और आपने सिंबल फॉर्म में डायग्राम में ही सब चीज़ों को मार्क कर लिया, तो आई कैन टेल यू 50% ऑफ योर वर्क इज डन। उसके बाद तो फॉर्मूला सोचना है और ये सारे फॉर्मूलाज द स्टूडेंट शुड रिमेंबर बाय हार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 it says, question number 5 says, a vessel is in the form of an inverted cone. एक ऐसा वेसल है जो कोन की तरह है। Its height is 8 centimeters. So height h is 8 centimeters. H is 8 centimeters. Which is open. And the radius at the top, which is open. ऊपर वाला radius is 5 centimeters. It is filled with water up to the brim. पूरा भर दिया पानी से। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. अब हम एक एक करके इसमें कुछ स्फीयर्स, लेड के स्फीयर्स एक एक करके डालते हैं एंड जो हर एक स्फीयर है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हमने बोला हमने कुछ लेड शॉट्स डाले, 1 2 3 4 5 6 10 15 100 200 300 कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले। इसकी वजह से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, अब जब लेड आएगा तो पानी को हटाएगा, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इस कोन का v है, तो 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम कम्स आउट एंड इज कलेक्टेड इन सम बीकर। क्वेश्चन इज find the number of lead shots dropped in the vessel. तो बच्चों वापस देखो, हमको एक कोन गिवन है जिसकी हाइट पता है, जिसका रेडियस पता है और पानी से भर दिया हमने। अब हम इसके अंदर कुछ स्फीयर्स डालते हैं ना, बांटे डालते हैं इसके अंदर। कितने बांटे डालें इसके अंदर कि 1/4 पानी बाहर आ जाए। So volume coming out is 1/4 of the big volume B. Alright, we are given a radius of the cone and height of the cone, and we are given radius of these spheres. We have to find the number of these lead shots or spheres that have been put in water. Pb plumbum, lead का symbol, chemistry. Volume of plumbum shots, lead shots, is equal to the volume of the water coming out, and the volume of the water coming out is 1/4 of volume of the cone. अब इस समझो, पानी कितना बाहर आया इज इक्वल टू लेड के n शॉट्स हैं, इनका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर कमिंग आउट। पानी, लेड शॉट्स ने जगह ले ली ना, पानी को हटाया तो पानी तो बाहर निकलेगा फिर, क्योंकि पहले से ही ये वेसल हमारी पूरी भरी है। और कितना पानी निकला, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन कितना है, सो 1/3 ऑफ पाई r square h। I substitute the values and I find is 209.52 centimeter cube. But this is the volume of the water in the cone. So volume of each spherical shot, sphere का volume होता है 4/3 pi r cube, so that is coming out to be
4 pi and r cube plus 0.52 centimeter cube. Volume of one shot. Now what is the volume of the water expelled? जो बाहर निकला पानी, that should be equal to volume of the volume occupied by the shots. So 1/4 of the volume of the cone is equal to n times the volume of each shot. एक स्फीयर 0.52 वॉल्यूम लेता है, तो n स्फीयर्स क्या लेंगे? n spheres have to take 1/4 of this big volume. So I say 1/4 of 209.52 is equal to n times the volume of one shot, that's 0.52. If I cross multiply and solve, I get my answer as 100.73, or I can take 100. So thus around 100 lead shots have been dropped in the cone. डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन को समझिए, फिर से देखना हो तो देख लीजिए एंड take up. Now coming to the next question, number 6. It says a solid pole, एक solid pole है, it consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeters. So एक orange वाला pole है, height h1, radius r1. r1 is given as, height is given as 220 centimeters and diameter is 24, therefore radius will be r1 is 12 centimeters. इस पोल के ऊपर एक छोटा पोल है, येलो वाला पोल के ऊपर पोल, which is surmounted मतलब उसके ऊपर by another cylinder of height 60 centimeters. So h2 is 60 and the radius is now 8 centimeters. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 6 grams of mass and given use pi as 3.14. तो हमको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट मीन्स 9 grams per cubic centimeter. Physics का quantity, density, mass per unit volume. Now what is the total volume of this solid pole? Is the volume of the lower part plus volume of the upper part, that is pi r1 square h1 plus pi r2 square h2. I am taking pi as 3.14, so r1 square is 12 square into 220 and r2 square is 8 square into 60. I solve this using a calculator and I get my total volume as 111,532.8 cubic centimeters. तो वॉल्यूम मिली, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? We need to find the mass of this pole. Now density is mass per unit volume, or we can say mass will be equal to density rho multiplied by volume V. So mass is volume into density, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इंटू इतने ग्राम्स मल्टीप्लाई किया हमने एंड आई गेट 892,262.4 ग्राम्स. केजी में कर देंगे, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जाना पड़ेगा हमको लेफ्ट की तरफ, तो आएगा 292.2624 केजी. राउंड ऑफ करेंगे तो 292.26 केजी. ये पोल इज 892.26 kgs, right? So concept of density, that's mass per unit volume, and volume, दो चीजें की, डायग्राम बनाया, जो भी गिवन था उसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ येलो पार्ट अपर पार्ट ढूंढा, वॉल्यूम मिल गया तो फिर फॉर्मूला यूज किया, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वहां से इसको ग्राम्स में आया, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेफ्ट की तरफ ले गए, बिकॉज 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम, इसलिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यहाँ गया तो बन गया
892.26 kg. Okay, so if you've understood, once again, give a pause, take a note, then move ahead. Second last question. It says a solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन को पढ़ते रहना चाहिए, साथ साथ लिखते रहना चाहिए. हाइट h 120 सेंटीमीटर and the radius are 60 centimeters is standing on a hemisphere of radius 60 centimeters and is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. So this touches this bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is also 60 centimeters and its height is 60 plus 120, that is 180 centimeters. ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल भी किया था आपके साथ, right? So our first job is to convert this into a diagram. तो ध्यान से देखो, ये नीचे हेमिस्फीयर है, रेडियस इधर का देखो चाहे नीचे का देखो, वो तो 60 सेंटीमीटर्स है. उसके ऊपर एक कोन है, उस कोन की हाइट 120 है. तो हमको पहले तो ढूंढना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय, फिर ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ द बाहर वाला सिलेंडर. सो पानी कितनी जगह में है इज द वॉल्यूम ऑफ द बाहर वाला सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, है ना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर. So volume of water in the cylinder will be equal to volume of the cylinder minus volume of the body. Volume of the body has two parts, volume of the hemisphere and volume of the cone. So let's put formulas. Volume of a cylinder is pi r square into capital H. capital H बाहर की height 180 minus ब्रैकेट्स के अंदर 2/3 pi r cube volume of the hemisphere plus volume of a cone is 1/3 pi r square h. Pi r square इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी. Let's take pi r square as common. I'm left with capital H minus क्या बचा, 2/3 भी बचा और एक r बचा, 2/3 r minus 1/3 h. Let us substitute the values. Pi into 60 square is 180 minus 2/3 times of 60 and minus 1/3 times of 120. So 320s are 60, 340s are 120. So 180 minus 40, that's minus 80. 180 minus 80 will be 100. So we will have pi को 22/7 दिया है हमने. Okay, so into 60 into 60 upon 100, that is इतना एक नंबर आ गया सेंटीमीटर क्यूब. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, therefore 1 cubic मीटर में 100 into 100 into 100, that is 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब. So 1 meter cube is 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर हम डेसिमल को 6 प्लेसेस ले जाएं, 1 place, 2 place, 3 place, 4 place, 5 place, 6 place, 6 place उधर ले जाएं, I'll get 1.131 meter cube. The volume of the water inside this toy is 1.131 cubic meters. एक और एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं हम. 1 मीटर क्यूब जो होता है ना पानी, उसका वेट होता है 1000 kg. तो बोलता है व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, 1 क्यूबिक मीटर का 1000 kg, तो 1.131 क्यूबिक मीटर का 1131.4 kg. दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड. ओके, फिजिक्स बनाया इसको मैंने थोड़ा सा. सो समझ आया बच्चों, ये हमारे पास टॉय था और हमने वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट किया. मेन बात याद रखने वाली, दैट डू नॉट पुट इन द वैल्यूज टिल द टाइम यू हैव द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला. दैट मेक्स लाइफ ईजियर. अलग अलग करोगे ना सबको सॉल्व, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा. दिस इज बेटर.
Coming to the last question of this exercise. I told you I am giving you 2 days to complete this exercise. Let me do it in one lesson. Question number 8 says a spherical glass vessel. तो एक बीकर है, केमिस्ट्री में होता है ना ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ऊपर एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, तो ऐसा क्वेश्चन है ये, राउंड बॉटम फ्लास्क. सो a spherical round bottom flask has a cylindrical neck 8 centimeter long. The height of this neck is 8 centimeters and 2 centimeter in diameter. Diameter 2 है तो radius कितना हो जाएगा 1 centimeter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeters. तो ये इसका diameter. So radius is half of 8.5, that's 4.25 centimeters. We need to check by measuring, by measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cubic centimeters. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and take pi as 3.14. ये बोलती है कि इसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब. हमको चेक करना है कि ये लड़की सच बोलती है कि झूठ बोलती है. लेट्स सी, सच्ची है कि झूठी है. Is the measured volume correct? So volume of this total body is equal to the volume of the spherical part plus volume of the cylindrical part. Volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube plus volume of the cylinder is pi r square h. So I put the values 4 by 3, pi की जगह 3.14, r cube is 4.25 का cube plus pi 3.14, radius इसका है 1 centimeter, so 1 square into h, height is 8 centimeters. I find this, I find the total volume comes out to be 346.5 centimeter cube, whereas this girl has found it to be 345 centimeter cube. Now the calculated volume is little larger than the given capacity. Therefore, the given result is not correct. The correct volume is 346.5 centimeter cube. छुट्टी लड़की है, थोड़ा सा ही गलती की है, not to worry, but मैथ्स में तो थोड़ी सी गलती भी बड़ी गलती होती है. तो according to mathematics, she is wrong, but approximately she might be right. थोड़ा सा shape of the liquid का meniscus, वो सब बातें, but it's okay. According to mathematics, this answer is wrong. The correct volume is 346.5 centimeter cube. Right? So ये conical flask question. So students, that is it as far as exercise 13.2 is concerned. Thank you very much for going through this lesson, and I will see you up day after tomorrow with the next exercise. Alright, so goodbye to you for today. Bye bye, take care, do your work and share your work on the communication page that we have, WeChat, WhatsApp page. Bye bye to you.